नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख और मेरा रुख पर हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पेशल कवरेज। आज हमारे साथ अनूप है और अनूप के साथ हम दो इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे। एक पहली चीज़ जो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चल रही है जिसके अंदर रोहित शर्मा ने अपना 32वां 100 स्कोर किया और दूसरा हम एक और इम्पोर्टेंट एक और इम्पोर्टेंट सीरीज पे बात करेंगे जिस पर शायद भारत में इतनी बात नहीं हुई। वो है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीता। करेक्ट। शुरुआत करते हैं भारत इंग्लैंड सीरीज से और दोनों मैच बड़े कंसेक्यूटिव तरीके से भारत ने जीते। एक लगा कि एकदम एक तरफा मैच रहा। पहले मैच में इंग्लैंड को 250 के अंदर आउट कर दिया और बड़ा ही कंफर्टेबली चेस किया। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने 300 बनाए पर वो भी बड़े ही आराम से चेज हो गए। सो इन दोनों मैचों को जो एनालिसिस है और प्लस रोहित शर्मा का इसके अंदर एक लॉन्ग अवेटेड सेंचुरी आई, करीब 16 महीने बाद उनकी ये सेंचुरी आई है। सो व्हाट डू यू थिंक? पहले तो राहुल, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल टू बी ऑन द शो एज ऑलवेज। आपने पूछा इंडिया इंग्लैंड सीरीज के बारे में, तो फर्स्टली सीरीज तो खत्म हो गया इन द सेंस फ्रॉम एन इंग्लैंड पर्सपेक्टिव, राइट। सो उन्होंने T20 सीरीज खेला, देयर आल्सो दे लॉस्ट। उन्होंने वनडे सीरीज भी खेला, दे हैव लॉस्ट देयर एज वेल। तो इंग्लैंड की तरफ से तो दिस इज एंड दिस कंटिन्यूज अ सीरीज ऑफ लॉसेस दे हैव हैड। अगर आप 2023 के वर्ल्ड कप से देखेंगे तो दे हैव नॉट परफॉर्म्ड anywhere close to the white ball squad that actually won the 2019 Cricket World Cup of one day and the 2022, if I'm correct, the T20 World Cup as well, right? So काफी change हो गया है squad में. So England have not been performing. Uh, the positive when I look at it from India from a one day perspective, right? Given the Champions Trophy is coming close by, मैं यही कहूँगा कि अगर इंडिया में अगर आप देखोगे तो देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, राइट। ऐसा नहीं कि एक प्लेयर ने परफॉर्म किया है जिसकी वजह से आप जीत रहे हो। कंसिस्टेंटली देयर हैज बीन परफॉर्मेंस। तो फर्स्ट मैच में रोहित डिडंट प्ले बट शुभमन गिल एंड श्रेयस अय्यर प्लेड वेरी वेल विद अक्षर पटेल डूइंग गुड कंट्रीब्यूशन। सिमिलरली अगर आप सेकंड मैच में देखोगे तो रोहित प्लेड वेरी वेल, सो डिड शुभमन गिल एंड इफेक्टिवली बैक्ड बाय like श्रेयस अय्यर and by again by अक्षर पटेल, राइट। अगर आप बॉलिंग में देखोगे इन द सेकंड मैच इंडिया वर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, स्पेशली अगर आप स्टार्ट में देखोगे तो दे मेड अ वेरी गुड स्टार्ट, राइट। उनकी काफी अच्छी स्कोर भी थी, उन्होंने कोई विकेट भी नहीं खोया था। बट देन यू हैड लाइक रविंद्र जडेजा एंड लाइक वरुण चक्रवर्ती एंड अदर्स कमिंग एंड चिपिंग इन constantly. There were like every key moment जब भी England have gone on the upswing, उस टाइम पे we have taken a wicket and brought England down. So essentially I think both the streams, both batting and bowling have been excellent. But the most heartening fact अगर आप मुझे पूछोगे तो वो है इंडिया की फील्डिंग। अगर आप नोटिस करोगे तो there were some really good catches. I think there was a wonderful catch by Yashasvi Jaiswal in the first game. There was another very good catch I think by Shubman Gill in the second game as well, right? So उनका भी बहुत ही अच्छा catch था वो। And like there was that run out that Shreyas Iyer did with a diving stop on the boundary which actually broke that opening partnership in the first game. तो ऐसे काफी मूवमेंट्स हैं विच आर इम्पोर्टेंट टू सी। अगर आप देखोगे तो एक प्रॉपर एनालिसिस के तौर पे देखोगे तो दीज आर द थिंग्स दैट रियली टेल यू हाउ अ स्क्वाड इज परफॉर्मिंग। इट इज नॉट अबाउट हाउ मच बैटिंग यू हैव डन और हाउ मच बॉलिंग यू हैव डन। इट इज टू सी कि आपकी स्क्वाड किस तरह से हर मैच में हर सिचुएशन में आपके पास ऐसे कोई प्लेयर है who is making a difference and it is not the same player. ऐसा नहीं कि like एक ही प्लेयर हर मैच में खेल रहा है। सो अगर आप इंग्लैंड की तरफ से देखिएगा तो there been no consistent performance, right? So all in all the one day series has definitely looked India's way, so that is a great positive. But आपने कहा था कि रोहित शर्मा की 32वां सेंचुरी है, which is a great achievement, right? By itself it's a very big achievement. I think he's third on the list. I think Virat leads that list and उसके बाद I think सचिन तेंदुलकर है, उसके बाद रोहित शर्मा है, जितना मुझे क्रिकेटिंग हिस्ट्री याद है। So it बहुत ही बेहतर अचीवमेंट है वो। टू गेट 32 सेंचुरीज इज नॉट अ मीन टास्क। बट अगर हमें ये लगता है कि ये एक इनिंग्स से सडनली रोहित शर्मा इज बैक टू फॉर्म एंड दैट्स हाउ द मीडिया वर्क्स, राइट। एवरीबडी लाइक विल स्टार्ट शाउटिंग सिंगल आ गए फॉर्म में and all those people in core fans will start saying like this is what we were talking about. But I think you need to take a pause. अगर आप एक genuine analysis देखो तो I do not think रोहित शर्मा is back to form. एक इनिंग्स ऑफ एनी प्लेयर, भले ही वो विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, does not take away the fact that he's still not in form.
yes, this innings was absolutely magical. He played like the Rohit Sharma that we know. But इस एक innings को रख के हम ये नहीं decide कर सकते हैं कि he is back to form, because that is a very odd way of looking at it. Yes, if he does perform in the next game as well, and if he does very well in the Champions Trophy, you can say that he's got his mojo back, he's got his form back. So I do not think Rohit Sharma is back to form. It's wonderful to know that he's at least got runs, which takes a lot of pressure on him. क्योंकि अगर आप कैप्टन भी हो और आप रन भी नहीं बना रहे हो तो आप पे बहुत प्रेशर बनता है from a squad perspective, right? So at least it's good to see that he's got runs, and he'll feel a lot more light when he plays the third game. So it is a very good sign from India's perspective. But let's not forget Virat Kohli hasn't got runs, and he got out the same way again. So there is still a big problem there, right? So interesting times. एब्सोल्युटली। और ये बड़ी एक अच्छी बात रही इस पूरे 2 मैचों को अगर हम एनालाइज करें, तो जैसा आपने ही बताया, अलग-अलग प्लेयर्स ने अलग-अलग पोजीशन, अलग-अलग सिचुएशन पर परफॉर्म किया। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हम अभी किसी एक तो प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं है। और पिछले काफ़ी समय से हम लोगों ने देखा कि रोहित और विराट जो है वो आउट ऑफ टच हैं, बट बाकी प्लेयर्स जंप इन कर रहे हैं और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें Correct. श्रेयस का कंट्रीब्यूशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, शुभमन का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। और बॉलिंग में देखें तो अक्षर ने भी कंट्रीब्यूट किया, जडेजा ने भी किया, वरुण चक्रवर्ती ने फर्स्ट मैच में जो उनका डेब्यू था वहां पर कंट्रीब्यूट किया, और नीतीश राणा ने भी कंट्रीब्यूट किया। एंड पॉइंट टू रिमेंबर कि अभी इस बॉलिंग स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह भी नहीं है और मोहम्मद सिराज भी नहीं है। ये दोनों जो वनडे में, टेस्ट में, सभी जगह खेलते हैं, बड़े अच्छा प्रोमिनेंट इनका कंट्रीब्यूशन है, वो लोग इसके अंदर नहीं है। तो मोहम्मद शमी जो है वो इसको लीड कर रहे हैं। अभी फिलहाल मोहम्मद शमी को देखा जाए तो वो एकदम अपने पूरे रंग में नहीं है, बट फिर भी ये एक मैच प्रैक्टिस उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि जब वो यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी में जाए तो कुछ एक मैच प्रैक्टिस लेते हुए जाए, एक ग्राउंड पर एक समय बिताया हुआ जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो उनके साथ में जाएगा, तो वो उनको हेल्प करेगा। अब यहाँ से जो तीसरा मैच है जो अहमदाबाद में है, उसमें कहीं आपको लगता है कि जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कंट्रीब्यूट करेगी या उसको चांसेस मिलेंगे, या फिर सेम स्ट्रेंथ के साथ में, सेम फायरिंग पावर के साथ में इंडिया? अगर आप मुझे पूछोगे तो आई थिंक देर आर फ्यू एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू लुक एट, राइट, बिफोर वी इवन गो टू द थर्ड टेस्ट मैच, सॉरी थर्ड वनडे मैच। वनडे चलता है करके हम भूल भी गए हैं अभी, ठीक है? तो एसेंशियली अगर आप देखोगे तो इसमें फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ श्रेयस अय्यर, राइट? नॉट ओनली हिज बैटिंग, but the one thing that Shreyas Iyer has struggled and people are used is the fact that he used to struggle with the short ball, right? शॉर्ट उनको बॉल्स। उनको काफी शॉर्ट बॉल से परेशानी नहीं थी, इट इज जस्ट दैट ही यूज्ड टू गेट आउट ऑन द शॉर्ट बॉल। आई डोंट थिंक कि उनकी कोई टेक्निक में ऐसी प्रॉब्लम थी कि उनको शॉर्ट बॉल खेलने नहीं आता है। इट्स जो मुंबई से खेलते हैं वो जनरली शॉर्ट बॉल खेलने की आदत रखते हैं बिकॉज ऑफ द वे द पिचेस समटाइम्स बिहेव्स इन बॉम्बे, एंड आई डोंट थिंक उनका वो प्रॉब्लम था, बट इट वाज द फैक्ट दैट ही वाज गेटिंग आउट टू द शॉर्ट बॉल। और उन्होंने इस सीरीज में काफी शॉर्ट बॉल्स को परफेक्टली हुक शॉट्स खेला है उन्होंने, लाइक दे ही डेल्ट विद इट वेरी वेरी वेल। इट इज ऑल्सो अनदर रिमाइंडर टू द फैक्ट कि आपको उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो प्लेयर्स फॉर्म में है उनको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो शुभमन गिल का पर्सनल फॉर्म was exceedingly poor when he came into this series, right? I'm not talking about one day, I'm talking about his overall form from the test series in Australia, right? And for whatever reason Shreyas Iyer wasn't playing in the squad. Both these players had performed very well in the 2023 World Cup, right? And they also performed very well in one days. So the fact that the selectors kept fate on the basis of that particular performance on the particular format tells you that like you still need to consider format wise form vis-a-vis like assuming that because वो टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं या वो T20 में नहीं खेल रहे हैं शायद उनका वन डे फॉर्म भी उतना ही अच्छा नहीं होगा। और दूसरी मानने वाली चीज यही है कि अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस it clearly tells you that there should be a clear mandate as to why Shreyas Iyer is not being picked into other squads, right? Because he is performing very well and there is no reason. In fact, अगर आप नोटिस करोगे तो उन्होंने ओपनली बताया कि in the first game he was not supposed to be playing, right? And that baffles me, to be honest, because his one day performance was arguably he was the best player of the 2023 World Cup, right? Irrespective of any player in the Indian squad, he was the best player. तो अगर आप फॉर्म के बेसिस पे शुभमन गिल को स्क्वाड में लोगे तो व्हाट वुड बी द रीजन फॉर यू टू ड्रॉप श्रेयस अय्यर एंड पिक यशस्वी जायसवाल हु वाज एक्चुअली डेब्यूइंग? तो
ये एक स्ट्रेंज लाइक अनोमली है जो हमें सोचना पड़ेगा फ्रॉम व्हाई इट इज बीइंग डन. इज देयर अदर रीजंस दैट वी ऑल कैन नॉट गेस दैट दे आर कंसीडरिंग अबाउट श्रेयस अय्यर. आपने थर्ड टेस्ट मैच के बारे में, थर्ड वनडे के बारे में पूछा, तो आई थिंक यू शुड गेट अ लॉट मोर प्लेयर्स इनटू द स्क्वाड. आई थिंक you need to get Arshdeep Singh and try how does he actually bowl, because Arshdeep Singh might be very useful to come into the squad when he plays the Champions Trophy. Uh, I don't think Harshit Rana has done enough to justify his place. It's been a very strange thing. I mean, without going too much into reasons, I think he's been fast tracked into almost every format. I do not understand what is that amazing thing that he's brought into the picture कि आपने उनको सारा format में like आगे लेके गए हो. He's done a decent amount of performance, but I still think that you need to give somebody like Arshdeep Singh a go before the next in the next match. You should try other bench players as well. Like Rishabh Pant has to play, right? अगर आप squad में देखोगे तो Rishabh Pant is not playing. So maybe in the next game you might want to get Rishabh Pant in and like rest KL Rahul, something like that. So like you could do good, or else I would do it the other way, right? अगर आप मुझे पूछोगे तो KL Rahul has not been informed, so I would say that I would actually drop someone like Shubman Gill, not drop, essentially rest Shubman रेस्ट। Gill and ask like the number 3 to be Rishabh Pant, right? So आप क्या करोगे कि आपने आपने KL Rahul को मौका दिया, because KL Rahul has been performing very well, right? Overall, it will be unfair on KL Rahul to be X based on the last two performance, because again उनका उनका नंबर कभी स्टेबल नहीं होता ना. उनको एक बार आप ओपनिंग करने बोलते हो, एक बार नंबर 4 में खेलने बोलते हो, 6 में खेलने बोलते हो, 7 में खेलने बोलते हो. तो आई थिंक वी नीड टू गिव केएल राहुल अ बिट ऑफ ट्रस्ट फॉर सम टाइम, एंड आई थिंक अगले वाले मैच में आप शुभमन गिल को रेस्ट करके यू कैन गेट इन ऋषभ पंत इन हिज प्लेस, you can rest Harshit Rana, and you can get in Arshdeep Singh to play the game. You could also try like playing a different combination in your like batting order and bowling order, because I don't think Jasprit Bumrah is going to play the Champions Trophy. I hope he does not play the Champions Trophy, because हाँ, honestly जैसे मैंने कहा था कि मोस्ट लाइकली ही विल नॉट प्ले। करेक्ट, और जीरो वैल्यू है राहुल. अगर आप देखोगे तो वनडे क्रिकेट की वैल्यू बहुत ही कम है, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर जसप्रीत बुमराह टू बी प्लेइंग दिस फॉर्मेट एट ऑल. आप उनको टेस्ट के लिए स्पेयर करके रखिएगा, जहां पे की वनडे की T20 टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे कोई वर्ल्ड कप है या कोई बड़ी टूर्नामेंट है या ऑस्ट्रेलिया के साथ आपकी T20 मैचेस है, तो आप जसप्रीत बुमराह को लेके आइएगा. बट अदर देन दैट आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट वॉचिंग जसप्रीत बुमराह केयरफुली. So like you keep him free for test. I don't think he should even be selected for Champions Trophy or one day cricket. इंडिया के पास काफी bowling बैकअप स्ट्रेंथ है जो काफी खेल सकती है. हम आसानी से 3 टीम बना सकते हैं विदाउट like needing any effort. So I think आपको बेंच स्ट्रेंथ को नेक्स्ट मैच में चांस देना होगा. Get in the bench, get them like acclimatized to the conditions, and then you will know कि आपकी exact playing 11 दुबई में क्या होगा, right? Because India is going with a significant advantage in Champions Trophy, because आप एक ही वेन्यू में सारे मैच खेलने वाले हो, which is a big advantage, unlike other teams who are going to play in different venues in Pakistan, right? And like if India does go forward in the competition, they're still going to be playing at Dubai for the semi-finals and finals, right? If I'm India, I have a significant advantage in the Champions Trophy, and it will be the same when Pakistan come and play a World Cup in India, right? They will again be playing in one single place in Dubai or somewhere, which will be advantageous to any team that is doing that. So obviously I think it will be a good idea to test the bench strength and see where things stand. बराबर। अनूप, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही थी। खैर उसका इंपॉर्टेंस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये क्लियरली डिसाइड हो चुका है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो है वो WTC फाइनल खेलेगी। पर अगेन फ्रॉम अ टेस्ट मैच पर्सपेक्टिव, और वो टेस्ट मैच जो सब कॉन्टिनेंट में टेस्ट मैच हो रहा है, उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 2-0 से हराया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए और ऑस्ट्रेलिया के मोरल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में आप जाके 2-0 जीतते हो, वो भी कन्विंसिंगली जीतते हो, राइट? उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने 5th डे तक लेके गए और इन्होंने मरते मरते जीता है. इन बोथ द टेस्ट मैचेस श्रीलंका वेर द स्क्वाड दैट वाज ऑलवेज डूइंग द चेसिंग. Australia played like India, right? Who play in the subcontinent, not the New Zealand series India. Okay, now we discount that series away. Okay, so जो normally India खेलती है subcontinent में, उसी तरह उन्होंने खेला. They took horses for courses, right? तो उन्होंने मैथ्यू कुनेमैन को चांस दिया,
and Matthew Kuhneman got 16 wickets, right? So just think of it, right? If as an Australian cricket fan and a big supporter for Australia, I would say that it is a great thing to see a young bowler like Matthew Kuhneman actually do well. And Matthew Kuhneman did very well जब वो इंडिया में भी आए थे, right? So it is showing that there is that growth available for spinners in a place like Australia. So अगर यहाँ के पिचेस में वो थोड़े से हेल्प होगा तो these spinners will develop, right? After I don't think Australia had a significant spin combination since Shane Warne retired, right? शेन वॉर्न और स्टुअर्ट मैगल की जो कॉम्बिनेशन बनती थी वैसे वाले कॉम्बिनेशन आपने उसके बाद नहीं देखा. तो अदर देन नेथन लायन जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, दे हैव नेवर पिक्ड एडम जैम्पा, व्हिच मींस दैट नेथन लायन को कंपनी देने के लिए ऐसा कभी भी दे डिडंट हैव अ वेरी बिग स्पिन बॉलर. दे यूज्ड टू गेट ऑफ एंड ऑन स्पिन बॉलर्स हु यूज्ड टू डू अ डिसेंट जॉब, but Matthew Kuhneman has shown that he's got all the talent. Australia went for horses for courses, right? They actually went into games with 3 spinners, right? And they trusted, like unke kafi young players have come good, right? So which is a great sign for any cricket team because Australia is in a far bigger transition than India is. Because India के पास 2 या 3 प्लेयर ही ट्रांसिशन में है, ऑस्ट्रेलिया की पूरी स्क्वाड ऑलमोस्ट ट्रांसिशन में, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स आर इन द लेट 30s. अगर आप देखोगे तो उस्मान ख्वाजा इज ऑलमोस्ट 38 आई थिंक, स्टीवन स्मिथ इज अराउंड 36, उनके साथ like Hazelwood is around 35 37, Mitchell Stark is around 36 37. So a far larger transition is due in Australia, right? अगर आप देखोगे तो it is great to see the younger crop that is coming in actually do very well. और उन्होंने ये भी किया कि by pushing Travis Head to open the innings in Sri Lanka, right? Which is a great move if you look at it from the perspective, because Travis Head की जो गेम है वो काफी सूट करती है for subcontinental conditions. So it is great to see them push, Travis Head up the order. And, like obviously I don't think this conversation can ever finish without talking about Steven Smith, right? Exactly. Steven Smith has been that glue in the Australian, or he's like Virat Kohli of India, right? उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को काफी सालों से अपने कंधों पे संभाला है, to be honest. It's very less time that you think of what Steven Smith has done. Like Ricky Ponting के बाद he's probably Australia's best player in the last 10 to 15 years. And once again, he has shown that, you don't push your best player from a particular position to another position because it may not suit him. तो उनको ये opening वाला जो idea किया गया था, which was an absolute disaster. It was, I mean, when it was first done, I really told in my own articles that it's absolute disaster to push a player like Steven Smith to open because वो उनकी opening position नहीं है. Not everybody can open an innings. It requires special talent in test. And it's very nice to see that Australia reverted back to him playing at 4. और उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, राइट? उनकी बैटिंग तो अमेजिंग थी सीरीज पे. ऑब्वियसली उनकी कप्तानी की कोई डाउट ही नहीं है. ही इज ऑलवेज बीन अ ग्रेट कैप्टन, दो आई स्टिल डोंट थिंक ही शुड बी कैप्टनिंग ऑस्ट्रेलिया. नथिंग टू डू विद द न्यूलैंड सीरीज, बट आई थिंक गिवन हिज एज, ऑस्ट्रेलिया नीड टू लुक एट हु विल बी द नेक्स्ट कैप्टन टू सपोर्ट पैट कमिंस, राइट? तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन नेक्स्ट होगा. आई डोंट थिंक स्टीवन स्मिथ इज दैट पर्सन बिकॉज ऑब्वियसली गिवन हिज एज आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर कैप्टन, राइट? सो यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट अ यंगर डेप्यूटी हु कैन टेक द विजन फॉरवर्ड. तो और चीज मैं ये कहूंगा राहुल, अदर देन दैट द गुड थिंग दैट हैपेंड फॉर ऑस्ट्रेलिया वाज जॉश इंग्लिश हु डेब्यूटेड एंड गॉट अ सेंचुरी, and Alex Carey who got a century as well, right? Right. The good aspects was these two players also got runs in subcontinental conditions, right? Which is very different to getting runs in Australia or getting runs in South Africa, जहाँ पे pitches इनकी shooting के लिए होती है. But to go to Sri Lanka and win 2-0 tells you that the Australian team is there in the World Test Championship, not by anyone's benefit or by the backdoor methods, but they are there, and South Africa is going to find it extremely difficult to get past the Australian squad that's going to be coming to play the World Test Championship final. I think they will retain the World Test Championship final and once again hold the mace. Tells you a lot, right? Tells you how right. well Australia have structured their form of cricket. Despite we keep telling that Australia के पास like अगर आप सोचोगे तो इंडिया के पास billion plus population है, cricketers play everywhere. Australia is not like that. We have a very small population. Not many players are there, but still like Australia churns out victory over victory. So it has to be to the process and the systems that have been put in place. So big kudos to Australia. I would like to talk about Sri Lanka as well, Rahul, if that's fine. Yes, absolutely. The player that I want to talk about is Dimuth Karunaratne, right? He's called it a day, and
he's one of those players in today's times जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया है, राइट? सो उन्होंने काफी टेस्ट खेला है, he's done amazing performances for his country. हम नहीं सोचते इनके बारे में बिकॉज हम श्रीलंका के बारे में वी डोंट सी देम प्लेइंग टू मच नाउअडेज, एंड आप इतने ज्यादा टेस्ट क्रिकेट फॉलो श्रीलंका के नहीं करते हो बिकॉज वो ज्यादा खेलते नहीं है. But Dimuth Karnaratne has been performing very well, but like he's moving on. So Sri Lanka will be mighty disappointed. Home conditions may to lose 2-0 to Australia, despite whatever you might want to call Australia, is an absolute disappointment if you're a Sri Lankan fan, right? It is like India losing 3-0 to New Zealand, and also convincingly, right? India lost convincingly to New Zealand, and Australia convincingly defeated Sri Lanka. So if you are India and Sri Lanka, you would actually feel disappointed, right? So Sri Lanka were underperforming, and I think उनके कैप्टन ने सही बताया कि they need more opportunities. Another surprising statement, Rahul, अगर आपने वहां पे नोटिस किया होगा तो उन्होंने बताया कि should we really prepare spinning tracks? Not long ago we were discussing the same thing about whether India needs to prepare spinning tracks. So it's very very important कि Asian teams जो हैं वो इस नजरिए से बाहर आए कि उनको कोई स्पिनिंग ट्रैक की जरूरत है टू विन अगेंस्ट स्क्वाड्स दैट कम फ्रॉम आउटसाइड. बिकॉज जब आप इतने स्पिनिंग ट्रैक देते हो तो इट एक्चुअली गिव्स एडवांटेज टू द ऑपोजिशन टीम, बिकॉज उनके ऑर्डिनरी स्पिनर्स भी आपके वो वाले कंडीशन में बहुत ही अच्छे दिखेंगे. कुनमन इज अ गुड बॉलर, बट इज कुनमन रियली गुड इनफ टू गेट 16 विकेट्स? वी विल ओनली नो व्हेन यू गिव अ फेयर पिच. अगर आपकी पिच एकदम ही टर्निंग है तो एनी बॉलर विल बी गुड ऑन दोस काइंड ऑफ पिचेस. एब्सोल्युटली नॉट सेइंग दैट कुनमन इज नॉट अ गुड बॉलर, but it is just that if Nathan Kunaman wants to grow as a player and show that he's really a good replacement or at least a good backup for Nathan Lyon, who's also almost 35-36, right? Then he needs to have fair pitches to play, right? अगर उनको spinning track मिला तो Nathan Kunaman will get wickets, and Australia can think that he's your replacement, but the day you get a proper pitch जहाँ पे इतनी ज़्यादा spin नहीं होती है, so that is where you'll suddenly find that Matthew Kunaman may not have got that experience to play. So it is very very important कि Asian teams, including Pakistan, start thinking about what kind of tracks you want to give for your own home country. आपको इस तरह के spinning tracks देना चाहिए just because you want to win home test matches. I don't think that is the way. I don't think the World Test Championship was intended to put you in a position where you need to prepare pitches that are going to be so much one-sided from any side. I don't think South Africa should go and prepare a very fast track. I have seen a couple of pitches in South Africa which has been very very fast, and and it is very clear the reason they are doing those pitches. हर country यही करती है क्योंकि उनको home advantage use करना है and get more World Test Championship points. Well, I think there is a problem that ICC needs to handle with the World Test Championship points जो मिलते हैं. Maybe there has to be some sort of a balance done so that you actually give any visiting team that wins test matches abroad more points than the team that actually wins. So that maybe may force local teams to think about actually giving them patta wali wicket agar main ho to. So maybe that's the fact that if an opposition team comes and wins a test match, they get more points, will mean that jo local team hai wo they might think before preparing that are pitches that are very very conducive to their form of play. This is just not spin, Rahul. This includes fast and bouncy tracks that have come up in South Africa, that have come up in other parts of the world, in the idea of hopefully having a home advantage. I think we have pushed it too far home advantage के basis में. So all in all, these two series showed us that Australia is still at the top. Other teams have to do catch up. एब्सोल्युटली, और ये बात बराबर है. और अगर वाकई में एक टेस्ट मैच को एक अच्छे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के अंदर खेलना है तो पिच जो है वो थोड़ी सी इवन पिच हो तो वो ज्यादा बेहतर है, जिसके अंदर बॉलर्स को भी उतना ही चांस मिले जितना बैट्समैन को चांस मिले. So अगर आप Australian pitches देख लो ना राहुल, if you look at the Australian matches that have the Border Gavaskar Trophy में, barring the last game at Sydney, I think almost all of the pitches were different, right? Let's be appreciative of the fact what Australia showed you there. Perth वाली जो pitch थी वो fast and bouncy थी लेकिन unplayable नहीं थी, right? उसके बाद जो मैच था, जो डे नाइट टेस्ट है, but generally favors the squad that has that evening. वो pitch की गलती नहीं है, वो ball है, वो condition की होती है, correct? थर्ड टेस्ट मैच जो था जहाँ पे वो एक्चुअली it went off because of rains, वो भी एक इवन सा पिच था.
the Melbourne pitch was, like completely half docile, which pushed the test match almost up to the 5th day, which means आपने एक decent enough pitch दिया जो 5 दिन चलती है. Barring the Sydney pitch, which the other match finished in 2.5 days, almost the 4 pitches that Australia provided did not give significant home advantage, right? I'm not saying कि आप home advantage मत दो. All I'm saying is that none of these pitches offered significant home advantage. It offered a fair chance to India to win the game as well as Australia. So वो सीरीज की जो रिजल्ट थी, वो जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि उसमें काफी फेयरनेस है. इट्स नॉट दैट कि वो पिच में फास्ट है या स्पिनिंग है. आपको लगता है कि वो एकदम फेयर सा रिजल्ट है, जहां पे इंडिया डिडंट परफॉर्म वेल इनफ. दे वर डिजर्वेंट लूजर्स 3-1, should have been 4-1. So that clearly says that, like Australia did the right combination, the right pitch for that particular series. Maybe something for other squads to think about as well. That's what I would want to say. राइट, एब्सोल्युटली. सो अनूप, आज आपने समय दिया और इन चीज़ों पे बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद. और इसी सीरीज के शो के हमारे वीकली एपिसोड्स में हम फिर से मिलेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी के टीम मेंबर्स भी हमारे साथ में हो और हम बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दों पर उसमें बात करें. तो आज आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू राहुल. ऑल गुड.